Oh, I love this dress. Look at the color. But the problem is that इसकी zip टूट गई है. I can't wear it in a normal way, but definitely we can use it. Hello guys, welcome back to my channel Being Navi. I hope you guys are doing well. Today's video will be about outfit elevation. I feel outfit elevation is all about creativity. आप जितना अपने outfit के साथ creative बन सकते हो उतना आप उसे elevate कर सकते हो. So why not to take basic outfits from your closet and do something creative with them so that they will look a little more stylish. So without much ado, let's get going with the vlog. सो हमारा फर्स्ट आउटफिट है एक सिंपल टी शर्ट एंड जीन्स. अगर इस आउटफिट को हमें एलिवेट करना हो तो आई स्टार्ट टकिंग इन माई टी शर्ट क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ी लंबी है. सेकेंडली आई हैव स्टार्टेड फोल्डिंग द बॉटम ऑफ माई जीन्स टिल द एंकल क्योंकि मुझे एंकल लेंथ जीन्स अच्छी लगती है एंड इट लुक्स वेरी क्लासी. सी, I'm adding a black belt here which will definitely give a punch to this outfit. I'm keeping my hair open here because I think it will go very well with this look. Add some accessories like earrings, neck piece or a watch of your choice. I'm putting on these silver color bellies because my t-shirt is white and I think silver color will go very well with this look. My t-shirt has long sleeves here so I'm just folding them up because I like to keep it short. And there you go, your look is complete here and you can see the difference. And it's time to move on to our next outfit. So guys, here's I'm wearing this tube top dress which is a perfect beach outfit. It has a stretchable belt at the waist for a better look. और यहाँ मैंने ये सी थ्रू शर्ट लिया है जो नेवी ब्लू कलर में है और इसे मैं कुछ इस तरीके से पहन लूँगी. And now this tube top dress has some different look which is completely covered from neck to toe. इस ड्रेस को और enhance करने के लिए I am using a stretchable waistband here. And there you go. I love this dress more now because it covers you from neck to toe and gives you a classy look as well. I'm wearing a pair of black heels to complete this look. I feel this look is perfect for some formal gatherings or even for cocktail parties. What do you think? Okay, so let's see what else we can do with this dress. So guys, I'm wearing this white sweatshirt which is personally my favorite. It gives you this cool vibe. And to make something different with it, I'm again using this stretchable waist belt. और मैं कुछ इस तरीके से अपने sweatshirt को adjust कर रही हूँ to give it a crop top look. It looks cute. And finally I'm pairing it up with my white sneakers because an obvious reason my sweatshirt is white, so yeah. If you want you can keep your dress like this or else you can tuck in inside this belt and give your dress a 3/4 kind of a look. Well, personally I like this kind of a look which is perfect for fun outings. What do you think guys? I'm happy to elevate this simple outfit in 2 different ways. And it's time to move on to our next outfit. And I'm wearing black color which is one of my favorite and going monochromatic, which means wearing one color from head to toe. And as you can see, I've always been a huge fan of such looks. But I guess black color compliments everyone. I mean, at least I feel so. So I'm pairing up this black jacket here. And this is giving me a more professional look. I'm carrying this small black handbag and wearing these black shades to complete this look. So what do you think about going monochromatic guys? I suggest you to try this look at least once and I'm sure you're gonna love it. Okay guys, so for our next look, I'm using this beautiful dress which I'm completely in love with. बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसकी जिप टूट गई है इसलिए हम इसे नॉर्मल तरीके से नहीं पहन सकते. बट नो वरीज गाइज, अगर हम इसे ड्रेस की तरह नहीं पहन सकते सो व्हाई नॉट टू वेयर इट लाइक अ स्कर्ट. और इसी बहाने मुझे एक नया आउटफिट भी मिल गया. आई थिंक ब्लैक कलर के साथ साथ व्हाइट कलर भी इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से सूट करेगा एंड आई लव बोथ द कॉम्बिनेशंस. व्हाट डू यू थिंक गाइज? डू ट्राई दीज कलर कॉम्बिनेशंस एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट. एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आउटफिट. गाइज, यहाँ मैंने एक बहुत ही क्यूट सा वन पीस पहना है विच हैज अ डेनिम टेक्सचर एंड गोइंग डेनिम इज क्वाइट अ ट्रेंडी नाउअडेज. और इसीलिए मैं इन डेनिम कैजुअल फुटवेयर को इस ड्रेस के साथ पेयर अप कर रही हूँ.
ये लुक हमेशा कूल दिखे ये ज़रूरी नहीं, यू हैव टू बैलेंस डेनिम विद समथिंग। सो यहाँ बैलेंस करने के लिए आई एम यूजिंग दिस वाइट शर्ट। ये मेरी हस्बैंड की शर्ट है, इट्स क्वाइट अ बिग, और इसे मैं अपने वेस्ट पे इस तरीके से बांध लूँगी टू बैलेंस दिस लुक। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस गाइज? मेरे ख्याल से white goes really well with denims. I'm just adding a pair of shades here and this is a perfect summer holiday look for me. I hope you guys like this transformation. ये तो हो गई ड्रेस की बात, चलो अब पहनते हैं डेनिम जीन्स। So guys, यहाँ मैंने अपनी डेनिम जीन्स के साथ पहना है white crop top. As you all know, I love wearing white with denims. Okay guys, so ये denim on denim look है, so obviously we have to pair it up a jeans और denim jacket here. और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कौन से फुटवेयर यूज़ करने चाहिए, so without thinking twice you should wear white sneakers. जैसे कि मैंने पहले कहा था, white denim को बैलेंस करने का काम करता है, so हमारे white sneakers और white crop top यहाँ पे इस लुक को बैलेंस कर रहे हैं। I hope you guys will try to carry this look soon. On this note, let's move on to our next outfit. So guys, here I'm wearing this black short skirt with this red crop top and believe you me, black and red is a very hot combination. और इस outfit के साथ मैं pair up कर रही हूँ these black stilettos. और इस outfit को elevate करने के लिए I am going to wear a black color cardigan here. आप इस आउटफिट के साथ ब्लैक लेदर जैकेट भी पहन सकते हैं, इवन दैट विल कॉम्प्लीमेंट दिस आउटफिट। पर्सनली आई लव ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन और इसे आप विंटर सीजन में भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो हियर आई हैव दिस ब्लैक एंड वाइट विंटर जैकेट विच लुक्स वेरी क्लासी एंड गोज ऑलमोस्ट विद एवरी अटायर। देयर यू गो, दिस जैकेट लुक्स गॉर्जियस। Guys, if you notice, these stilettos are not going well with this look now. So मैं इन्हें change करूँगी and instead I'll wear these long winter boots which are complementing this look and elevating this attire. Perfect! I love it so much. I love winters for this one good reason, that you get to wear such beautiful clothes, accessories and outfits. And I'm completing this look with wearing this beautiful scarf. And this was our last outfit guys. Let me know your thoughts about it. Okay guys, so I really hope you liked all these small tips and tricks of elevating your outfit, and hopefully this video will be helpful for you. So if you like this video, please give it a big thumbs up, comment down below and let me know your thoughts about this video, or which style you like the most, or which outfit elevation you love the most. Do not forget to share it with your friends, and most importantly, do not forget to subscribe to Being Navi channel. So on this note, this is Being Navi signing off right now. Bye bye. Much love. God bless.